Welcome to Couple of Bitches, Vishaka and Devesh. Let me just settle. Still settling. The most asked question, which was how did we meet, हमने ये actually बता दिया है in one video. So if you've not watched it yet, यहाँ पे है I icon. यहाँ पे जाइए, क्लिक करिए, just watch that entire video of how did we actually meet, and हम उसके आगे ये वीडियो में बताने वाले हैं, which has a lot of drama, a lot of twists and a lot of Entertainment. Entertainment. The topic is that how did we actually become friends? Before Dating. Yes. So we'll tell you that story from our past. Blast from the past. It's a blast from Running the past. down the memory lanes. Yes. So basically, you know that I joined the office and Devesh was my boss, and it was all like a regular day. चल रहा है, बातें हो रही है, normal चल रहा है, काम चल रहा है, कुछ काम भी तो करेंगे ना यार. काम के लिए ही तो ऑफिस आते हो. Point. He has a Shit, boss जाग गया मेरा. Hello! So I'll describe Devesh as a boss, okay? And he is very serious. When he's in office, he's a completely different person. मैं ऐसे बैठता हूँ. खुसड़ा ass. Yeah. चश्मा भी इधर तक हो जाता है ऐसा. See, फोफाजी. Focused boss. Focused boss देखता है कपिल शर्मा शो पूरे टाइम अपना लैपटॉप पे. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है. He has all the episode rattoed of Kapil Sharma show. Anyway, so but also on the other hand, he's just like out there. He knows what is the work that needs to be done. He knows how to get people to work. So he's just like a very cool but a strict boss. Yeah. It has to be a combo. When it's serious, when it's work, you do work. So आपको कितनी ब्रेक्स लेनी है, कितने टाइम में आना है, कब करना है, 2 घंटे में काम करना है, 5 घंटे में करना है, मेरे को लेना देना ही नहीं है. आप करके काम होना चाहिए बस. As you see now, when you see on Instagram or you're seeing him here like this, he is till date he is not that person in the office. He is just alternate personality altogether. Like who is this person? You don't even know. So he's that. And how was I as an employee to you for like first few days? ये जब तो आई थी, न्यू ज्वाइनी थी, और इसका कुछ एक्सपीरियंस इतना ज्यादा था नहीं, बिकॉज इट्स वाज हर फर्स्ट जॉब, फर्स्ट एम्प्लॉय फुल टाइम जॉब. इसके पहले तो इंटर्नशिप किया हुआ था उसने. तो बहुत प्यारी सी, एकदम इनोसेंट सी लड़की है, और दिख बहुत शी इज लाइक स्टाइल्ड हरसेल्फ सो गुड. शी इज लुकिंग लाइक always presentable. To the T. Yeah, ऐसे काजल भी एकदम ऐसे प्रॉपर्ली लगाया है, लिपस्टिक प्रॉपर. You cannot forget my काजल, no? It's just like तो brain में हमेशा मेरे दिमाग में बैठा ही हुआ है. ड्रेस भी एकदम मैचिंग, कॉन्ट्रास्टिंग पहना है. बाल एकदम जेट ब्लैक, मैट ब्लैक बाल है, एकदम लंबे बाल है, घने बाल है, इतने प्यारे बाल. देख के एक इंटरेस्टिंग सी, एक मजा आ जाता है देख के कि कोई आ रहा है, कोई पर्सनैलिटी आ रही है. So, वैसा होता था तो आई यूज्ड टू लाइक, मैं खो जाता था, लेकिन मैं दिखा भी नहीं सकता बिकॉज़ मैं बॉस हूँ. अगर दिखा दिया, खोज गया तो फिर तो भांडा फूट जाएगा ना, तो दिखा नहीं सकता था. लेकिन अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे हैं अलग लेवल के कि भाई ये तो इसको तो ये बंदी तो जानना पड़ेगा कि I asked the question, how was I as an employee? She was an employee. I think ये अब भी खो गया है. मैं खो गया इसकी तारीफ करने में, बट yeah, she deserves it. तो एम्प्लॉय अगर है बिस्सू तो बहुत ही एकदम ब्रेनी है, फोकस्ड है कि काम करूंगी, डट के करूंगी काम, और परफॉर्मर है भाई. आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते शॉडी वर्क. शी कैन नॉट. रिजल्ट ओरिएंटेड बंदी है भैया, जो काम दो उससे ज्यादा परसेंटेज लाके देगी आपको. तो काम में बहुत अच्छी थी. So this used to be a regular day where I'm reporting to him and he is being my boss, just like a typical boss. Yeah. And then happens to be that, as Devesh mentioned, that I was very वो बोलते हैं ना फर्स्ट बेंचर होता है ना, जो बच्चा जो सारा काम करेगा और मतलब गधा मजूरी कर देगा, लेकिन बहुत दिल से करेगा सब कुछ करके. बट टिल डेट आई एम दैट कि ओ नहीं ये करना है. आई हैव लाइक
hundreds and thousands of to-do lists to complete in a day. So anyway, depressing, but so, again, as mentioned, organized, unorganized. Very unorganized. Correct? बहुत ऐसे spontaneous चलता हूँ मैं. हाँ, दोनों का very different. So there was this one day where I had actually mailed something to Devesh, which was expected. That work was expected out of me. So I was very prompt, okay, in my work. So I just completed all my work and I mailed it to him because he's my boss. So I mailed it to him, okay, I'm reporting to him. Then I go to Devesh and I just tell him that Devesh, ये काम हो चुका है and I've mailed it to you. Can you please have a look and whatever. जैसा एक आदर्श एम्प्लॉय जाता है अपने बॉस के पास बताने के लिए कि प्लीज चेक द मेल, और ये आती है मेरे पास. Yeah. And To मैं- which? Yeah. What do you And reply? मेरा Devesh? रिप्लाई क्या होता है? मेरा मैं बहुत स्नूटी हूँ. लाइक बाकी सारे एम्प्लॉयज भी मैनेज करता हूँ, ये भी है उसमें से एक है जिसकी मेरी आंखें ऑलरेडी ऐसे. पर फिर भी हमको स्नूटी बनना फिर भी है. बताना तो पड़ेगा ना स्नूटी है. इसको बता दिया कि भाई तेरे पे दिल आ गया तो फर्स्ट डे पे कैसे चलेगा? You have to. So no, it was not first day. It was First day like मतलब few days. Initial first day. हाँ, initial, हाँ. Initial first month. Yeah, ऐसा. few months. तो down the line. देन शी कम्स कि मेल चेक कर लो. एंड देन मैंने मेरे बॉस का मेल अभी तक नहीं देखा है, तो तेरे मेल का क्या बात कर रही है तू? And I was like, who the does he think that he is? And I was just like, what did I hear? Yeah. Firstly, but अब क्या है ना कि मैं तो छोटी एम्प्लॉय हूँ ना, तो मैं कुछ ज्यादा बोलती नहीं. मैं हाँ चल ठीक है, अपने मन का मालिक है ये बंदा, तो ठीक है करेगा, जब देखेगा तब देखेगा. Yeah. So that was one of the incidents which had happened, and I had just like gone, like मैं चली गई वहाँ पे खड़ी रह के, क्या करूँ, मुंह पे टीवी बंद कर दिया लोगों ने मेरा, तुम क्या ही बोल लो इसके आगे. I was like ठीक है. Then there was this one time where so I'll explain one more incident, since you all know that I was very new to the office, right? So I didn't know Excels or Word doc or anything like that. I had no clue. And ऐसे बहुत लोगों को स्कूल में सिखाया जाता है, but unfortunately हमको नहीं सिखाया गया था, but ठीक है. So I was sitting on this desk. कौन से स्कूल से थी तू? कौन से कॉलेज से थी तू? रॉयल पर्पल? Just shut up. So no, हमको सिखाया गया था, मैंने नहीं सिखाया था. चुप. सिखाया था, हाँ? जो- सीखा नहीं. अपनी गलती देखो अभी मान रही हाँ. है. ये ऐसी गलती एक बॉस ही ढूंढ सकता है अपने एम्प्लॉय में. I am married to you. Do you get that? Yeah, I'm married. You love me, I love you. Yeah, it doesn't sound good, but I'm married to my employee. It sounds very controversial actually. इसीलिए हम कभी किसी को स्टोरी बोलते हैं ना, बहुत controversial, हम खुद ही controversial हो जाते हैं वो बताने में. So Devesh had given me some Excel work, okay? And at that point of time, I used to hate Excel because कुछ आता ही नहीं था. Numbers, maths. Now I like Excel. दूर तक वास्ता नहीं था इसका. तो आज भी नहीं. वो तो आज भी नहीं है. देखो अपने मुंह से बोल रही है. Shut up. 789 minus 7. Why are we doing this? विशु 789 minus 7. उधर कमेंट आ गया, जवाब दे दिया उसने. तेरा बाकी है. हाँ? My brain froze. Please don't. It's too much अरे साथ ही तो pressure. माइनस कर रहा है, कहाँ से तेरा ब्रेन फ्रोज हो गया? 780. हाँ? नहीं कितना बोला, क्या बोला, नहीं क्या बोला, क्वेश्चन, I forgot the question. It's too much pressure. I don't know what to do. 782. ट्रोल Guys, हो जाएगी एक तू. मिनट, guys, मैं एक मिनट. I know it's contradictory कि मैं आदर्श बच्ची हूँ, पर मेरा मैथ्स वीक है. आदर्श आया ही नहीं है कमेंट में आज. काम पे नहीं आया आदर्श. किसकी बच्ची है तू? ऐसा बोलना होता है. Stop it. Coming back. I heard 787. Coming back to the story, okay? Devesh had given me some Excel work, and I was just sitting, and I was not understanding like what to do with this. I was not understanding. So Devesh just calls me to sit beside him, obviously in a very boss employee type of thing. He just calls me, makes me sit beside him, opens the Excel on his laptop, and shows me कि देख ऐसे करना है करके, ठीक है? To which I said, I was nodding, just going nothing in my head, and I was just like, I was just like, जा कुछ नहीं रहा दिमाग में, but सुन तो रही हूँ सब कुछ. So then I think Devesh, somewhere we never discussed about this situation, like this entire thing, but I remember that Devesh
probably must have thought कि इसको नहीं समझ आ रहा कुछ भी. So he started to do on his own the entire Excel. He started to just हाँ do इसका it काम on भी his मैं ही own. कर रहा हूँ. हाँ कर रहा था fully. So he was started to do on his own, and that was for me a little sweet. अभी तक तो सैया बनाया भी नहीं था मैंने तेरे को, और तेरे लिए ऑलरेडी चीजें करना चालू कर दिया था मैंने. Yeah. हाउ ग्रेट आई वाज. You were. नाउ आई रियलाइज कि मैं कितना सही था बंदा यार इसके लिए. अभी तक हूँ, वो तो ऑब्वियसली आप देख ही सकते No. So this is one of the incident. Yeah. Then there was this one day where I was very stressed, okay, in life, like very stressed. I don't know क्या काम का pressure था, but I was really stressed. Then what happens is Divesh just comes to me. Yeah, I see her like in a tensed way. दिख रहा है कि थोड़ा इसका शक्ल देखता थोड़ा तो रहता उतरा था ना सा हुआ है. मुझे, देखता तो रहता था. Yeah. ऐसे कानी आंखों से देखता था, ऐसे टेढ़ी आंखों से, ताकि इसको दिखना नहीं चाहिए, इसको समझ नहीं आना चाहिए कि मैं उसको देख रहा हूँ. So मैं देखा और कि you know मैं what भी I'll tell stressed you, है. आँख तो ठीक है, कान भी होते थे उसके, ठीक है, like who as in not in a possessive way, just कि विशाखा बिस्सू बात क्या कर रही है किसके साथ और क्या बात कर रही है, not like in a possessive way, but just like he was alert कि where is she, what is she doing, ऐसा टाइप. या आप अगर शॉपिंग पे जाते हो तो आप कपड़ा चेक करके देखते हो ना कि दाग तो नहीं है, कुछ फटा हुआ तो नहीं है. सारी चीजें एकदम टू द टी है. इसको ट्रायल रूम में जाके कपड़ा चेक कर सकते हैं. एवरीथिंग इज देयर. नो, सो ये तो करना पड़ता है. हाँ, कमिंग बैक टू द स्टोरी. What? So I was really stressed, Yeah. but then Divesh comes to me. सो मैं देखता हूँ थोड़ी सी टेंशन में लग रही है, तो थोड़ा इसका टेंशन दूर कर देता हूँ कि आई जस्ट अप्रोच हर एंड से कि लिसन, व्हाई आर यू स्ट्रेस्ड? यू डोंट नीड टू स्ट्रेस व्हेन आई एम देयर. सो जस्ट चिल, टेक वन थिंग एट अ टाइम एंड जस्ट गो विथ इट, यू नो. सो आई एम देयर, लाइक मैं हूँ, टेंशन मत ले, कुछ भी रहेगा तो मेरे को बोल. तो ऐसे मैं सारे एम्प्लॉयज के साथ जनरली करता हूँ, चाहे वो मेल एम्प्लॉय हो फीमेल एम्प्लॉय हो, इन अ वेरी सपोर्टिंग मैनर. उसमें उसका कोई इंटेंशन नहीं होता, बट इसके लिए भी वही सेम इंटेंशन था कि तू टेंशन मत ले. But for that little thing, gesture that he did, probably it was very normal for him. But for me, it was a big thing because honestly, like during my previous jobs and everything, I've had bad experiences. I should have been treated like a little kinder or whatever, because नए होते हो यार, तुमको थोड़ा kindness चाहिए रहता है probably. So for me, it was very surprising for me that Divesh is such a kind boss, understanding boss. So it was a big thing for me. Again, not in a corrupted way, I was thinking, but I was thinking genuinely that he is a nice boss. After that work day ends, Divesh went to a trip, I think. या मैं दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पे निकल गया था 2 दिन के वेकेशन के लिए. And I went back home while thinking of this entire situation or how has it impacted me in a good way. So I was just on my way. तभी विरार लोकल में ट्रैवल करती थी मैं. So I was just on my way. Those were the days. Those were the days, yeah. So on the way till the time I reached home, after home, while in my PJs, I was just thinking, it was just going on in my head that how a boss could have been so, basically it meant so much to me at that point of time that it was going in my head. So I just thought, and Divesh और मैं आज तक ये बात पे लड़ते हैं कि मैंने पहले अप्रोच किया या दिवेश ने पहले अप्रोच किया. इसको ये बात अच्छी लगी, ठीक है, मैंने इसकी केयर की, हाँ, इसको अच्छा फील करवाया, एंड देन मैसेज कब आता है मुझे, लाइक शी इज थिंकिंग वे बैक हर होम. So I just thought that एक मिनट मुझे बोलने दो. हाँ, 1 बजे रात को मुझे मैसेज आता है. क्या मैसेज आता है सुनो इसके मुंह से. No, so listen. So I stop it. बोलो. I just wanted to genuinely from my heart appreciate the boss. ऑफिस आवर्स में भी तो बोल सकती थी ना तू. तेरे को तो कुछ करना था मेरे साथ. फिदा हो गई थी ना मुझ पे, तो कैसे अप्रोच करे रात को 1 बजे अपने बॉस को. No, I just वो तो सो गया होगा ना. वो तो सो गया होगा. Listen. So guys, listen. हाँ, मैं भी सुन रहा हूँ. बोलिए मैडम. Listen, so guys, let's not forget that I was new to the office culture. जिंदगी में न्यू नहीं है तू, ऑफिस में न्यू है. सबको पता है कि कोई 1 बजे अपने बॉस को मैसेज नहीं करता है. I didn't know that.
that. I mean, I mean, पेड़ा बन के कैसा No. पेड़ा खाया है इसने, कोई सीखे इससे। ये बंदी ने मतलब Okay, so you, the audience who is listening to this entire thing, you comment down below to tell us that whose team are you on? Audience did बहुत Bissu smart approach or did Devesh approach Bissu? मेरे intentions corrupt नहीं ठीक है थे. ठीक है, बता तेरा मैसेज बता, 1 बजे क्या आया रात को मैसेज? So while I was thinking about this, everything, I just genuinely thought, shut up. बोल। I just genuinely thought to appreciate the human being. So I just opened WhatsApp. I went to the chat of Devesh and I just messaged him, "Hi Devesh, thank you for showing concern for me today." मैं रात इतना ही को- लिखा मैंने, ठीक Yeah. है, इसमें मैं इतना मेरी ही छुट्टी लिखा. पे हूँ, मुझे मतलब आउट ऑफ नोवेयर आई वाज अवेक बाय दैट टाइम, सो मैं वेकेशन पे था। मैंने मैसेज देखा, अरे भाई साहब, See, it was just a message from me. एक बजे। See, it was just a message from me. मैसेज तो बहुत सही था, मैसेज बहुत राइट था अपने जगह पे। जो टाइम पे मैसेज आया ना, वो कहीं थोड़ा सा डाउटफुल लगा मुझे कि इंटरेस्ट तो सामने से भी आ रहा है दिवेश, थोड़ा सा डांस कर लेते हैं, देयर इज समथिंग What are you doing? हियर दैट वी This कैन is my- कुक, We can cook. Okay. Okay. Go ahead. So I was like happy to see her message and I was like फिर हमारी चैट नहीं हुई, चैटें हो रही है। हम 4 बजे तक बातें कर रहे हैं, ना ये सो रही है ना मैं सो रहा हूँ। दोस्त लोग को मैं छोड़ के आ गया। मैंने बोला भाई तुम चिल करो पूल में, तुम जाओ ड्रिंक्स करो, तुमको खाना खाना है खाना खाओ, एक दूसरे के साथ तुमको टाइम स्पेंड करना है करो। आई एम हियर सोफा पे लेट के, मेरी चैटें चल रही है और मुझे मजा आ रहा है। But I'm telling you, my intentions were not that. अरे रे, आपको तो पता है इसकी इंटेंशन, No, बहुत ही you नेक इंटेंशन थे इसके, बहुत ही Stop. प्योर एंड पायस। stop it. You Pavam. No, stop it. पावम। You let us know in the comments what do you think about it. So that was where we started to talk. हमारे वहां पे हमारी आइस ब्रेक हुई। आई एक थिंक दूसरे को 4 बजे जानने तक अगर लगे। हम चैट कर रहे हैं, बहुत Yeah. एम्प्लॉय तो बहुत कुछ ब्रेक हो गई है इसके अलावा. या बट तो यहाँ पे हमने एक दूसरे को कुछ हद तक जानने लगे थे। फ्रेंड्स बने नहीं अभी तक पूरी तरीके से, बट ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग फ्रेंड्स है। एंड देन फिर हम जब ऑफिस पहुंचे 2-4 दिन में, मैंने सोचा कि चलो अपनी टीम को, अपने वर्टिकल को बाहर डिनर पे ले जाता हूँ आफ्टर ऑफिस। But he had some hidden agenda. बता दे एजेंडा मेरा He had hidden agenda. जैसे कि तो चलो आ रही है तो ये भी आएगी, मेरी टीम में है, बाकी सब भी आएंगे, तो लगे हाँ तो थोड़ा बहुत और जानने मिलेगा और थोड़ी सी चीजें पकाने को मिलेंगी। So then I was like, let's take them to dinner. we sat in a group. There were a group of I think 5-6 people, yeah. 5-6 people or something in his team, and obviously he's the boss of all of us. So we were just sitting, and so waiter uncle came. Waiter uncle started to ask for the order. Everybody started to order their own things. Say for example, Devesh chose a drink, or there was this girl who chose something, wine probably, or beer probably, and everybody was started to Order their own order thing. their own drinks and food and whatever. And at that point of time, I was this Sadori bachchi. Like Rani bachchi, and I used to not like drink or whatever. ये दिवेश ने मुझे बिगाड़ा है इतना लाइफ में. सब दिवेश ने किया है. So I used to be very like sabhya. So the waiter uncle then looks at me and goes like, और आप क्या पियोगी, माजा? And he had this face, and I don't know how did he know? And I was just like, हाँ. एंड एक्चुअली वो टाइम पे माजा ही पीती थी, और वेटर अंकल ने करेक्ट गेस कर लिया था, एंड वी वर आल्सो शॉक्ड एंड वी वर लाफिंग सो हार्ड कि हाउ It कम was not funny, guys. he guessed it so right, It was not and we funny. were like yeah get maza. And
And you know what? In this hidden agenda Yes. that Devesh wanted to know me better, he suggested to the group that we play Never Have I Ever. कोई बनता ही नहीं है गेम का कोई स्कोप, पर just because he wants to dig information from me, Yeah. we started Never Have I Ever, and you know what? ग्रुप एक्टिविटी, अगर मैं किसी को बाहर लेके आया हूं तो ग्रुप एक्टिविटी होनी चाहिए ना. मारेंगे तेरे को सारे HR पकड़ के, इधर ग्रुप एक्टिविटी करा रहे तू. HR left the group, left the chat. HR left the chat. This video, they have reported that video. Yeah. Never have I ever में कुछ होता है तो शॉट लेना पड़ता है. This guy is making me have माजा shots. माजा shots. 1 लीटर माजा खत्म करवाया इससे. मेरे को डायबिटीज की शॉट्स दिला रहा है बंदा. शुगर हाई हो गया उसको. So that happened. Fun night. Fun night. So that happened, and that's how we then started to become Friends. as in we used to interact and Yeah. ऐसा. अभी तक डेटिंग पार्ट आया नहीं है. आया guys. भी नहीं है डेटिंग बट पार्ट फ्रेंड्स में भी हम कैसे थे, दैट्स आल्सो समथिंग वेरी एक्साइटिंग टू नो. या ट्विस्ट फुल Yes. एक्साइटिंग एंड Yeah. ड्रामा. हमारा ऑफिस रोमांस के बारे में हम आगे एपिसोड्स में या आगे के वीडियोस में आपको बताएंगे कि हाउ डिड वी स्टार्टेड डेटिंग वंस So- वी बिकेम फ्रेंड्स. So if you have found this video very interesting, Yes. let us know whether you want to know what happens next in the story. Yes. Let us know in the comments, and that will give us somewhere, you know, कि Yeah. चल How बनाते हैं many यार. comments do you want them to do so that we release our You know, next last time we commented that we want only 50 comments which Yeah. says you release your wedding video. episode? Yeah, still today हमने अपना वेडिंग वीडियो रिलीज Really? कर दिया है. यहाँ पर वापस से देख सकते हो आप. Link. लेकिन अभी तक मुझे मेरा वेडिंग वीडियो रिलीज कर दो, हम आपका वेडिंग वीडियो रिलीज कर दो करके कमेंट अभी भी आ रहे हैं. You guys are so So, cute, yaar. Thank guys you are so much cute. for commenting again and again, and we really appreciate your comments. We really love what you comment on our YouTube, on our Instagram, on all our platforms. Sometimes the comments are funnier than what we actually upload. So that's क्या हम comment हंसते होते हंसते मर जाते हैं. हम हंस के पागल हो जाते हैं यार. So let us know whether you want to know what happens ahead in the story. Let us know whose team are you on. They are on team दिवेश and बिस्सू. बंटवारा नहीं करते हमारी ऑडियंस, हमारे सपोर्टर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स. दे लव अस. टीम दिवेश और टीम बिस्सू ये किया है. Like, share, comment and subscribe. and click on the bell icon so that आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलते जाए. हमने हमारी कम्युनिटी पोस्ट भी एक्टिव कर ली है, हम हमारे शॉर्ट्स भी डाल रहे हैं, हम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में भी आ गए हैं. So every week we will make sure that you get some of the other videos, entertaining videos, funny videos, relatable You videos get some of the other masala from our us. live. Yes. Bye. Bye bye.